जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच तीखी नोकझोंक। धनखड़ ने जया को सुनाई खूब खरी खोटी। नाराज जया ने की माफी की मांग। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति की टोन पर सवाल उठाए। सभापति जगदीप धनखड़ भड़के और मर्यादित आचरण की नसीहत दी। विपक्षी सदस्यों ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के आचरण को अमर्यादित बताते हुए निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ। राज्यसभा की कार्रवाई हंगामे और निंदा प्रस्ताव के बाद स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि जया बच्चन ने जब बोलना शुरू किया तो कहा कि मैं एक एक्टर हूं और बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन समझती हूं। मुझे माफ करिएगा सर, आपकी जो टोन है ठीक नहीं है। हम लोग कलीग हैं, आप वहां हैं, आपकी टोन अस्वीकार है। इस पर भड़के सभापति ने कहा कि जया जी, आपने महान उपलब्धि हासिल की है। आप जानती हैं कि एक एक्टर डायरेक्टर का विषय है। उन्होंने कहा कि मैं हर रोज दोहराना नहीं चाहता। सभापति ने कहा कि हर दिन आपकी स्कोलिंग करना नहीं चाहता। आप मेरी टोन को लेकर बात कर रही हैं, बहुत अधिक है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि आप कोई भी हो, आपको डेकोरम मानना पड़ेगा। आप सेलिब्रिटी होंगी लेकिन डेकोरम मानना पड़ेगा। देखिए पूरी खबर। मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं। मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, once again, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए ऑनरेबल मेंबर्स, बैठिए आई नो हाउ टू डील विद इट। बैठिए। जया जी, यू हैव अर्नड अ ग्रेट रेपुटेशन। यू हैव अर्नड अ ग्रेट रेपुटेशन। यू नो, एन एक्टर इज सब्जेक्ट टू द डायरेक्टर। यू हैव नॉट सीन व्हाट आई सी फ्रॉम हियर एवरी डे। I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No seat given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196, Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license
Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Khargeji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to get... No, Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. No. It is misconduct. It's a misconduct. Get going. I know you want to destabilize the entire nation. Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Kharge, as a epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of Constitution. You are doing it. It is lack of decorum, disrespect to democracy, disrespect to Constitution. You are walking away from your obligations. You are walking away from your duty. Honorable members, they don't want to participate. They know how to create only chaos. I am surprised. Absolutely. The nation is a priority. The nation is always first. Honorable members, honorable members, honorable members, honorable members, take your seat, take your seat, take your seat, take your seat. Honorable members, एक सेकंड